जी अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आई हैव टू स्टार वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन पीके। जनरल नॉलेज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उनके सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 आज हम करेंगे। इसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ ऑफ जनरल नॉलेज फॉर पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के टेस्टिंग के जो इदारे हैं उनमें मोस्टली ये आते हैं। और ख़ास तौर पर ये लेक्चर सीरीज़ एजुकेटर्स के लिए, जो पीपीएससी एजुकेटर 2021 है उनके लिए ये बनाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में जितने भी जो टेस्ट आते हैं उनमें जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन तमाम जो दूसरे टेस्ट हैं उनके लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पीके पर अपलोड हो चुके हैं और उनके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स और क्विज़ेस भी दिए गए हैं। तैयारी के बाद आपने वो क्विज़ेस लाजमी तौर पर अटैम्प्ट करने हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ नोट्स और जो क्विज़ है वो दिया गया है, वो भी आपने लाजमी तौर पर अटैम्प्ट करके नीचे कमेंट सेक्शन में उसका एक्सपीरियंस आपने शेयर करना है। इसके अलावा कोई और आपका सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ जनरल नॉलेज फॉर पीपीएससी, एफपीएससी एंड एनटीएस। इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर नंबर 4, इसमें हम 50 MCQs करेंगे। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं जनरल नॉलेज के। इसके बाद हमने कौन सा सीरीज़ शुरू करना है, आपसे दरख्वास्त है कि आप कौन से सीरीज़ के लिए ज़्यादा विलिंग हैं कि जनरल नॉलेज की तैयारी के बाद हमने कौन सा सीरीज़ और कौन से सब्जेक्ट का सीरीज़ शुरू करना चाहिए। उसमें जो 50% जनरल हमारे पास होता है उसमें करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है। इसके अलावा जो बेसिक कंप्यूटर है हम या तो वो स्टार्ट करेंगे या फिर इसके अलावा जो हमारे पास बेसिक मैथ है, बेसिक इंग्लिश, जियोग्राफ़ी, हमने इनमें से कौन सा सीरीज़ शुरू करना है। तो हर सब्जेक्ट के 3 से 5 लेक्चर्स होंगे। उसमें हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो होंगे 300 से लेकर 400 या 500 के रेंज में हम जस्ट वो करेंगे जो कि पीपीएससी के पहले जो पेपर हो चुके हैं उनमें आ चुके हैं या जिनके इस दफ़ा आने के चांसेस हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट डेविड कॉपरफील्ड? करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ल्स डाइकन। Number 2, the name of which animal is aboriginal term meaning no water? So correct option is koala. Number 3, which animal has the biggest eyes of any living creature? Correct option is horse. Number 4, the Wrigley building is located in which US city? So correct option is Chicago. Number 5, which is known as city of skyscrapers? Correct option is New York. Number 6, the capital of Canada is correct option is Ottawa. Number 7, driest place in the world is California, which is also known as Death Valley. Number 8, largest museum in the world is in correct option is USA, United States of America. Number 9, World Environment Day is on correct option is 5th June. Number 10, the world oldest known city is correct option is Damascus और दमिश्क, आप इसे उर्दू में कह सकते हैं। Number 11, Hindenburg line is between correct option is Germany and Poland. Number 12, highest dam in the world is correct option is the Grand in Switzerland. Number 13, the first prime minister of Bangladesh was correct option is Mujibur Rahman. Number 14, headquarter of Gandhara civilization is in correct option is Taxila. Number 15, which country is largest in area? Correct option is Russia. Number 16, the largest planet is correct option is Jupiter. Number 17, in which country did Rottweiler originate? So correct option is Germany. Number 18, which color is produced by adding together yellow and cyan? येलो और cyan को इकट्ठा करने से जो रंग बनता है करेक्ट ऑप्शन इज ग्रीन. Number 19, where the biggest salt mine located in Pakistan? Correct option is Mangora. Number 20, the most beautiful stone marble is extracted from which province of Pakistan? Correct option is NWFP, North West Frontier Province, जिसे हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं. Number 21, on which area of the moon did Armstrong, Aldrin and Collins make their landing on 20 July 1969? Sea of Tranquility is the correct option. Number 22, what name is more commonly given to a tree genus Texas? Correct option is yew.
नंबर 23, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़ रिवर सिंध, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है। नंबर 24, इन विच कार्टून सीरीज डू द कैरेक्टर्स शेफ एंड टॉडमैन अपीयर? करेक्ट ऑप्शन इज साउथ पार्क। नंबर 25, इन विच कंट्री इज़ द पोर्ट ऑफ डेपी? करेक्ट ऑप्शन इज फ्रांस। Number 26, in which country are the headquarters of multinational company Nestle? The correct option is Switzerland. Number 27, which two primary colors are mixed to make purple? So correct option is red and blue. यहाँ पे एक और MCQ मोस्टली पूछा जाता है कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, तो रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन जो कलर हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, RGB से भी कहते हैं, ये आपने माइंड में रखना है। नंबर 28, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज़ फुल सो करेक्ट ऑप्शन इज अ बर्ड। नंबर 29, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? करेक्ट ऑप्शन इज जॉर्ज वाशिंगटन। नंबर 30, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? करेक्ट ऑप्शन इज जैस्मीन। Number 31, where is tomb of Mughal Emperor Jahangir? Correct option is Lahore. Number 32, which city in Switzerland was the headquarters of the League of Nations? Correct option is Geneva. Number 33, at which sport have Keiji Okada and Yoko Hasama been world champions? So correct option is karate. Sorry. Number 34, in which US state the port of Trapon Spring? Correct option is Florida. Number 35, ice cream was first produced in which country in 17th century? Correct option is Italy. Number 36, the total area of the capital of Pakistan, Islamabad, is correct option is 907 square kilometer. Number 37, what is the official language of Mexico? Correct option is Spanish. Number 38, what is the standard monetary unit of Turkey? That is number 38, what is the standard monetary unit of Turkey? That is correct option is lira. Number 39, what is the capital of Queensland, Australia? The correct option is Brisbane. Number 30, in which country did the Crimean War take place? So that is 19th century. Number 41, in which US state is the city of Tallahassee? So correct option is Florida. Number 42, who starred as Superman in the 1970s and 1980s film series? Correct option is Christopher Reeve. Number 43, which is the national bird of Pakistan? Correct option is chokor. Number 44, who was the second wife of King Henry VIII of England? Number 44, who was the second wife of King Henry VIII of England? So correct option is Anne Boleyn. Number 45, the Painted Desert lies in which US state? Correct option is Arizona. Number 46, in which year did the Titanic sink on its Magellan voyage? Correct option is 1912. Number 47, which country is the world's largest producer of coffee? So correct option is Brazil. Number 48, what is the capital of Libya? So correct option is Tripoli. Number 49, how many white stars are on the national flag of USA, United States of America? So correct option is 50. Number 50, which bird with a distinctive call lays its eggs in the nest of the other birds? So correct option is cuckoo. ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 4, जनरल नॉलेज फॉर PPSC, FPSC, NTS, ETC. सो होप यू ऑल कि आपने ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी किस्म का आपको डेटा चाहिए तो आप NTS, FPSC या PPSC के हवाले से अगर आपको किसी सब्जेक्ट का डेटा चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और इसके साथ साथ आपने जो एक काम करना है वो ये बताना है कि इसके बाद हमने कौन से सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करनी है। बेसिक जो कंप्यूटर के MCQs हैं हम उनकी सीरीज़ शुरू करें, जियोग्राफी, पाक स्टडी या डेली साइंसेज, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट हमने शुरू करना है। आप तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।